Hello guys, assalamu alaikum, namaste and welcome to my channel. My name is Osama and in today's video we are going to guide you about the complete scholarship application process. And the scholarship that we are going to talk about is offered by ISTA. ISTA is an institute that is located in Austria. So you all might have heard about Austria. Austria is a beautiful country in Europe. So if you wish to continue your higher education in Europe, so that is a really good opportunity for you. You all should apply for this scholarship. So if we talk about the applications deadline, so the applications are open now, and the deadline for this application is 8 January 2024, and the last date for submission of a reference letter is 14 January 2024. If we talk about the documents that are required for this application, so you need a CV and a statement of purpose, and then you need university transcripts and diploma and contact information of 3 referees. So you need at least 3 reference letters for this scholarship. If we talk about the selection criteria, so first of all, you need to have an undergraduate degree with a good score, and the undergraduate degree should be relevant to the field that you are applying for. And then you also need 3 reference letters. The reference letters from academic background are given priority, but still you have an option of getting 1 letter from industry. And if you talk about the statement of purpose, so you need to write about your past research experience, why you are applying for this program, what is your motivation, and how it will contribute to your future career plans. And then if we talk about next selection criteria, so they will check your relevant skills, for example internships, participation in research projects and stuff like that. And then they'll also check your transferable skills like communication skills, experience with working in teams, etc. And then they will also take diversity into their account while they are choosing applicants for scholarship. And now we will teach you how to apply for this scholarship. So first of all, you will click on the apply now button. So after clicking on this button, you will have to register yourself first. So we will click on the I need to register button. And now you will enter your details. Here you will write your first name, last name, email, and then you will write your password. And after writing your password, you will click on the register button. So I have filled the information. Now I'll click on the register button. So I have successfully created my account. Now I have to activate my account from the link that they have sent us in my inbox. So here you can see the link that they have sent us. All we have to do is to click on that link. And we have successfully confirmed our account. Now we will log in our account by writing our email address and password over here. After logging in, you will see the screen on your computer, and here you will click on the start application for PhD Open Call 2024. Here you can see some instructions that they have written for us. And here you will have to fill all of your information. So first of all, we need to fill our personal data. सबसे पहले आपने यहाँ पे first name लिखना है, फिर last name लिखना है. Then you have to write your current address, and then you have to select the country where you are residing currently. And if your current address is different from your permanent address, here you will choose an option yes, and then you will fill the information about your permanent address in these blanks. After filling the information, here you will write your contact email, phone number, mobile phone number, and then here you will enter information about your date of birth, nationality, and here you will select your gender if you're male or female. After filling the information about your personal data, here you will fill the information about your education. So here you will select your degree. If you have a master degree, you will select I will hold a master's degree.
If you have a bachelor's degree, you can choose I will hold a bachelor's degree, and you can still apply even if you're in your 7th or 8th semester, and you will have your degree by September 2024. Here you will write the info about your bachelor's degree, your bachelor's degree name, bachelor's department, and then you will choose your university from the drop down menu over here. Here you will write your bachelor's institution website. Here you will write the name of the city or town of your university, and here you will choose the country. Over here you will write the degree start date, and here you will have to write the degree end date कि आपकी डिग्री कब स्टार्ट हुई और कब ख़त्म हुई. Here you will have to write the total marks, total score. सो अगर आप CGPA लिखते हो तो आप यहाँ पे 4 CGPA लिख लो. अगर आपके परसेंटेज में मार्क्स है तो आप यहाँ पे फिर परसेंटेज लिख लो. अगर आपका CGPA 5 या 10 में है तो आप फिर टोटल CGPA यहाँ पे लिखोगे. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पाकिस्तान में हमारा 4 होता है तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे. फिर यहाँ पे आप जो है लोवेस्ट पॉसिबल CGPA लिखोगे जिस पे आप पास होते हो. आपका मतलब स्केल है मिनिमम CGPA का. फिर आप नीचे जो है अपना स्कोर लिख लोगे, जितना भी स्कोर आपने लिया है अपने बैचलर्स की डिग्री में. फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 लिया है 3 लिख लो, 3.9 लिया है 3.9 लिख लोगे. तो ऊपर आपने टोटल और सबसे कम स्कोर लिखना है जो पॉसिबल स्कोर होगा आपकी यूनिवर्सिटी में. फॉर एग्जांपल पासिंग मार्क्स आपने यहाँ पे लिखने हैं, जितना पासिंग स्कोर है आपकी यूनिवर्सिटी में वो लिखने के बाद आप नीचे अपना जो आपने स्कोर लिया हुआ है अपनी यूनिवर्सिटी में वो लिख लोगे. एंड इफ़ यू आर इन योर 8th or 7th सेमेस्टर एंड यू डोंट हैव योर फाइनल ग्रेड येट, सो यू विल क्लिक ऑन दिस बॉक्स ओवर हेयर. और अगर आपके पास कोई और डिग्री भी है तो आप यहाँ से येस चूज़ करके जो है वो मज़ीद डिग्रीज़ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो. फिर एजुकेशन की इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप आओगे नीचे एप्लीकेशन डेटा में. तो यहाँ पे जो है आपने अपने 3 रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे चूज़ करके लिखने हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप बायोकेमिस्ट्री एक आपका जो है वो प्रेफरेंस है रिसर्च का. फिर आप जो है सेकंड पे जो आपकी सेकंड प्रायोरिटी का होगा प्रोग्राम तो वो आप चूज़ करोगे. और थर्ड पे आप अपनी थर्ड प्रायोरिटी का रिसर्च एरिया जो है वो चूज़ कर लोगे. तो आप जो है यहाँ पे 3 रिसर्च एरियाज़ चूज़ करोगे और वो जो है आपकी रैंकिंग के वाइज ही होगा. अगर आप फर्स्ट जो है जौन से को चूज़ करोगे तो वो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी, सेकंड रिसर्च एरिया फिर आपकी सेकंड प्रायोरिटी होगी और थर्ड रिसर्च एरिया आपका थर्ड प्रायोरिटी का होगा. सो हियर यू विल राइट योर रिसर्च अबाउट योर रिसर्च एरियाज़. फिर यहाँ पे आपने जो है यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर्स चूज़ करने हैं जो आपकी इंटरव्यू लेंगे बाद में, और वो प्रोफेसर्स जो है वो आपके कोर्स के रिलेटेड होने चाहिए. तो आप जो है वो प्रोफेसर्स कैसे देखोगे? वो प्रोफेसर्स देखने के लिए आप जो है यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करोगे. इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास जो है उन प्रोफेसर्स की सारी डिटेल आ जाएगी कि कौन से प्रोफेसर किस डिपार्टमेंट से हैं. तो वो आप उस अकॉर्डिंग जो है चूज़ कर लोगे. फॉर एग्जांपल हम लिंक पे आ गए हैं तो यहाँ पे मैं बायोलॉजी चूज़ करता हूँ. बायोलॉजी में अब मेरे पास सारे प्रोफेसर्स की जो है वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी और उनके डिपार्टमेंट्स वगैरह के इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी. तो जौन से मेरे रेलेवेंट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं वो मैं 3 चूज़ करके जो है अपना यहाँ पे फिल कर लूँगा. और यहाँ पे आप जो है उनके नेम पे लिख लोगे सारों के. फॉर एग्जांपल मेरा एक ये प्रोफेसर है, फिर दूसरा उस तरह जो मेरे रेलेवेंट डिपार्टमेंट का है वो भी मैं चूज़ करूँगा और फिर तीसरा चूज़ करके 3 नेम्स में यहाँ पे लिख लूँगा. फिर यहाँ पे बारी आती है कि डॉक्यूमेंट्स की. डॉक्यूमेंट्स में आपके पास मिनिमम कम से कम जो है वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए, आपके पास CV होनी चाहिए और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए. तो यहाँ पे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपनी CV PDF में अपलोड कर दोगे. ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने PDF में ही अपलोड करने हैं. फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो PDF में अपलोड करना है. फिर आपने यहाँ पे बैचलर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है. अगर मास्टर्स किया है तो उसकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दे. फिर अगर आपके पास कोई प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है IELTS वगैरह तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दो. फिर नीचे आप अपने इंटर्नशिप्स, अवार्ड्स और पब्लिकेशंस के बारे में लिख सकते हो. यहाँ पे अगर आप ने IST में इंटर्नशिप किया है तो येस कर लो, नहीं किया तो नो कर लो. और अगर कोई और इंटर्नशिप्स किए हैं
तो वो आप यहाँ से चूज़ कर लोगे। फॉर एग्जांपल 3 मंथ से कम का है तो येस लेस देन 3 मंथ्स कर लो, 3 मंथ्स टू 6 मंथ है तो ये कर लो, 6 मंथ से ज़्यादा है तो ये कर लो। फिर यहाँ पे आप 2 लाइंस जो है अपनी इंटर्नशिप के बारे में लिखोगे, 2 लाइंस में उसको डिस्क्राइब करोगे। फिर आप नीचे जो है चूज़ करोगे कि आपका कोई लेबॉर्ट्री एक्सपीरियंस है कि नहीं, कि आपके कोर्स वर्क के बाहर कोई आपने लेबॉर्ट्री का एक्सपीरियंस लिया है तो येस कर दोगे। फिर आप उसको उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे 2 लाइंस, 1 से 2 लाइन में जो है वो एक्सप्लेन करोगे, डिस्क्राइब करोगे। फिर अगर आपके पास कोई पब्लिकेशंस है तो आप यहाँ पे येस चूज़ कर लो, अगर नहीं है तो नो कर लो। फिर उस पब्लिकेशंस के यूआरएल्स लिंक्स जो है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर लोगे। वो पेस्ट करने के बाद अगर आपने साइंस ओलंपियाड्स में किसी फील्ड में पार्टिसिपेट किया है तो आप वो चूज़ कर लोगे यहाँ से, और फिर उसको जो है 2-3 लाइन में डिस्क्राइब कर दोगे नीचे। फिर आप अगर कोई अवार्ड्स जीते हो आपकी थीसिस के लिए, मास्टर्स की थीसिस के लिए या पब्लिकेशन के लिए या किसी और एकेडमिक अचीवमेंट के लिए, तो आप यहाँ से चूज़ करके उसके बारे में 1 से 2 लाइन यहाँ पर लिख लोगे। वो लिखने के बाद आप आओगे नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे, तो यहाँ पे आप चूज़ करोगे कि आपने कैसे सुना स्कॉलरशिप के बारे में, तो आप यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर दो। और फिर आप अगर सोशल मीडिया करते हो तो कोई वीडियो यूट्यूब की सेलेक्ट कर लो। फिर आप यहाँ से येस ना या नो कर दो कि अगर आप ISTA विज़िट कर चुके हो या नहीं कर चुके। फिर आप ये फिल करके नीचे आओगे, तो नीचे आप अपने रेफरीज़ की डिटेल डालोगे। रेफरीज़ की डिटेल डालोगे तो वो जो है ये साइट जो है वो लिंक सेंड करेगी आपके प्रोफेसर्स को या आपके जो साइंटिस्ट या सुपरवाइज़र्स हैं उनको, और वो जो है वो रेफरेंस जो है वो फिल करके फिर सबमिट करेंगे। रेफरीज़ की डिटेल डालने के लिए सबसे पहले आपने एक रेफरी की डिटेल यहाँ पे डालनी है, उनका टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इंस्टीट्यूशन, ईमेल और कंट्री लिखना है। फिर आपने ऐड रेफरी पे क्लिक करके मज़ीद रेफरीज़ की डिटेल जो है वो यहाँ पे डाल लेनी है। इस तरह से आपने 3 रेफरीज़ की डिटेल डालनी है। 3 रेफरीज़ की डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर लोगे। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, और 14 जनवरी से पहले पहले जो है आपके प्रोफेसर्स ने आपका जो है वो रेफरेंस लेटर जो है वो सबमिट करना होगा। और ये थी हमारी एप्लीकेशन की इन्फ़ो। और अगर आपके कोई कन्फ्यूजन है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर आप हमसे पूछिएगा, हम आपको खुशी खुशी आंसर करेंगे। और आपके अगर कोई रिक्वेस्ट है वो भी बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।